So hello everyone, welcome back to my channel. This is Anshika and today I'm here with a brand new video, and this video is going to be blockbuster, and you will get each and every freaking tip that you need and all the mistakes that you must avoid in your class 10th in order to score 95% plus in class 10th. Okay, I myself have scored 96% in class 10th, and I think I'm the right person to guide you through this journey and what are the things and what are the mistakes that you must avoid in order to score 95% plus in your class 10th. Without any further ado, let's get started with the video. The number one thing is no perfect study plan, right? Many students do what many students do is that they do not make a perfect timetable. They do not have a plan like what chapters do they need to do today, tomorrow, by the end of the week, by the end of the month, by the end of the quarterly, monthly, right, annually, yearly, like what the targets are. Okay, so they do not know about themselves. They have not self introspected. They have not got to know. They did not focused on what they lack, what their strengths are, right, and what their weaknesses are. So I think that should be the major thing. आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि ये कोई पबजी गेम है जहां से शुरू करा वहीं से खेल लिया, कोई गेम है, राइट। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपने ये पढ़ा है, देन यू नीड टू डू दिस एंड दैट. So you should always have a plan with yourself. Do not make this mistake not having a plan in your class 10th, right? You must know what you are gonna do today, tomorrow, and every freaking day. Okay, you must know that. Number two thing is avoiding NCERT. What many students do is that okay, R.S. Agrawal बहुत अच्छी book है, R.D. Sharma बहुत अच्छी book है, we will do S. Chand, we will do this book, Educart, Oswal. Every freaking book they try to do, right? उनको क्या लगता है कि जितनी बुक्स करेंगे उतना मार्क्स आएंगे अच्छे, लेकिन दैट्स अ मिथ. ओके, अ प्योर मिथ दैट कि आपको मार्क्स आपकी एनसीईआरटी ही दिलाएगी. एंड एनसीईआरटी को इग्नोर करना, एंड के लिए रखना. ओके, पहले ये भारी भारी बुक कर लेते हैं, इनसे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. एनसीईआरटी तो बहुत चिंदी बुक है, एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल बुक है, या तो फिर बुक ऐसी है कि अभी नहीं पढ़ते, बाद में देखते, राइट. बट एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई विल पेस्ट हाउ आई यूज्ड टू स्टडी NCERT in order to score 96% in class 10. So NCERT, it's very important for you. You must not ignore it. You will regret. Write this thing from my personal perspective and my opinion that you will regret if you ignore NCERT at this moment. You must do it from the very starting till the very end. Okay, NCERT is your best friend. NCERT is your best friend, your Bible, your guide. Number third mistake that students usually do is that they ignore answer writing practice. They do not do answer writing practice. They think okay, हमने ये पढ़ लिया टॉपिक, ये मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ये साइंस का कंसेप्ट पढ़ लिया है, अब हमको सब कुछ आ गया, राइट, अब हमें सब कुछ आता है एंड वी कैन राइट. बट अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट आप एग्जाम्स में लिखोगे, सो मार्क्स तो ऑब्वियसली कटेंगे. देयर इज नो इफ्स एंड बट्स इन दिस थिंग. ओके, मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे. सो इट्स बेटर इफ यू प्रैक्टिस इट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग. लाइक अगर आपको एक चैप्टर क्लास में करा दिया, इनमें 2 चैप्टर करा दिए, तो उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसको आंसर्स कैसे फॉर्मुलेट करेंगे आप, कैसे आंसर्स का स्ट्रक्चर लिखेंगे, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, राइट. So you must do it from the very starting only. Okay, so number 4 thing that students usually avoid and you must keep an eye on this is paper presentation. Paper presentation is one of the core concept. It's one of the key element to the success to score 95% plus in your class 10 board exams or in any exam, even in competitive exam. How you present your answers is very important, right? लाइक आपको कोई आंसर्स आता है, अगर आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, आपने पूरा एक पेज भर दिया, यू वोंट गेट योर फुल मार्क्स. किसी भी टाइप के टीचर के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन पढ़ेगा बैठ के, राइट. आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक हमेशा सॉलिड इंट्रोडक्शन डालना चाहिए, देन आपको बॉडी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, उस बॉडी में मेन पॉइंट्स, लाइक आपको बॉडी में यूज करना चाहिए विद बुलेट पॉइंट्स, राइट, हेडिंग्स के साथ, बुलेट पॉइंट्स के साथ. यू मस्ट राइट दैट थिंग एंड उसके बाद यू मस्ट प्रोवाइड अ परफेक्ट कंक्लूजन टू योर आंसर. And in addition to that, if the answer or the question is of higher weightage, you can provide a mind map or a flow chart with your answer to make it more professional, to make it more attractive, right? So that the teacher doesn't just see your answer, doesn't just check your answer, but just give you marks on the basis of that thing, on the basis of that flow chart, that mind map,
so that they get to know that the student knows something and he has done something throughout the year and he knows the concept very well. The fifth thing that we are going to talk about is last minute panic. A lot of students, a number of students panic at the very end of their examination. That's why they make it a big fuss. They make a ruckus out of that. So I'll advise you not to do that. Study from the very starting. Do not create a fuss. Do not create a havoc at the very end of your examination. Do not panic. एंड पैनिक किस चीज से कम खत्म होगा? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, राइट? अगर आपको सारी चीजें आती है, यू विल बी कॉन्फिडेंट, एंड इफ यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी एबल टू राइट वेल, एंड इफ यू विल बी एबल टू राइट वेल, you will get good marks. That's all. That's really easy, right? That's a simple equation that you're gonna follow, and I'll tell you that if you avoid these 5 mistakes, if you keep these things in mind, you are gonna crack it. You are gonna score really great marks. And that's all for today's video. If you have any freaking doubt, even the smallest of the thing, if you have any freaking doubt, even the smallest of the thing, you can ask me in the comment section and I'll be replying to that. That's all for today's video. I hope to meet you next time with a new and a great video. Till then, bye bye.